Hello students and welcome to my channel Learn with Nisha ji. So today we will be studying the first law, that is the law of conservation of mass. अगर आपको atoms and molecules का basic introduction देखना है chapter का तो आप इससे previous lecture जो playlist में uploaded है please watch that also, तो आपको ये better समझ में आए. So you can subscribe my channel and like and share this video, okay? So you will get regular playlist updates whatever videos we are uploading, right? So now let's understand the law of conservation of mass through an activity 3.1. So let's think over about a question like, is there a change in mass when a chemical change or chemical reaction takes place? क्या लगता है आपको, जैसे सपोज दो मीन्स एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स या वन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड दे रिएक्ट टू गिव यू सम प्रोडक्ट, ओके? So do you think the total mass of the products and the total mass of the reactants does it change? So initially your views may differ. आपको जो भी लगता है you can post it in the comment section and then we can discuss about it, right? So let's do this activity. We take a set X and Y of chemicals. ठीक है, X में हमने लिए हैं copper sulfate, barium chloride, lead nitrate. और Y कैटेगरी में हमने लिए हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. So we prepare separately a 5% solution of any one pair of substances listed under X and Y each in 10 ml or water. Now you take a little amount of solution of Y in a conical flask and some solution of X in an ignition tube. तो इस टाइप का आपका सेटअप लगेगा, okay? So this is your conical flask और ये हमारी small ignition tube है. Right here you are putting on a cork, through a thread you are tying this. So you are hanging the ignition tube in the flask carefully. So see the solutions do not get mixed. Mix नहीं होंगी ये, okay? So put a cork on the flask. तो ये हमें setup लगाना है. Okay, अब आपको क्या करना है? You have to weigh the flask with its contents carefully. ठीक है, आपने वेट कर लिया जब कोई रिएक्शन नहीं हुई, दोनों कंटेंट्स अलग अलग थे, ओके? नाउ यू टिल्ट एंड swirl the flask so that the solutions X and Y get mixed. अब X और Y अगर मिक्स होंगे तो उनमें कोई केमिकल रिएक्शन होगा, ओके? नाउ यू weigh it again, ओके? So what happens in the reaction flask? क्या हुआ रिएक्शन फ्लास्क में? उसमें केमिकल रिएक्शन अकर होगा जब सॉल्यूशंस X एंड Y विल गेट मिक्स्ड. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट लिया हो, तो एक ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट विल बी फॉर्म्ड, ओके? नेक्स्ट इज, डू यू थिंक दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? यस, केमिकल रिएक्शन होगा क्योंकि नाउ X एंड Y कैन easily react with one another, वो मिक्स हो जाते हैं, okay? Now next is, why should we put a cork on the mouth of the flask? कॉर्क हम क्यों पुट करते हैं? कई बार क्या होता है, कुछ रिएक्शंस में गैसेस भी रिलीज होती है, ठीक है? तो अगर आप कॉर्क पुट नहीं करोगे उसके माउथ से वो रिलीज हो जाएगी गैस और फिर मे बी वेट में चेंजेस आ सकते हैं जो आप इसका वेट कर रहे हो, ओके? नेक्स्ट इज, डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट्स चेंज? तो क्या ये चेंज होगा? नो, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. मास जो आपका पहले था, इस स्टेज पे था, okay, like before mixing X and Y and after mixing X and Y it remains the same, okay? So law of conservation of mass, it states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. This statement is very important. Thank you so much for watching the lecture. So इस lecture में से generally जो question put up होता है वो होता है like you have to state the law of conservation of mass, okay? जो एक्टिविटी थी वो जस्ट आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए है, अदरवाइज आपका जनरली स्टेटमेंट ही पूछते हैं इसमें से, ओके? सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल लर्न विद निशा जी फॉर मोर वीडियोस इन दिस सीरीज. थैंक यू.